What's wrong with the mindset of the girls who are getting married, be it love marriage, arranged marriage? I took my space to get married. मैं शादी से डरती थी, मैं शादी करने से हमेशा पीछे हटती थी. Before I got married, मैं तब तक सोचती थी कि क्या मुझे शादी करनी चाहिए कि नहीं. I had a conversation with my own brother and I used to tell him that I'm very confused कि मुझे शादी करनी है. I was not confused about the guy, but I was confused about कि मुझे शादी करनी है कि नहीं. So he only told me one thing. He gave me 7 days time. He told me, you first be sure. You first understand that whether you really want to enter into the marriage or not. I sat down, understood, thought about it, reflected, and that's when I told him that yes, I am going to take this decision. It's not that easy to enter into a marriage. So girls, you have to first be very clear whether you want to get married or not. It's not that easy कि चलो पेरेंट्स ने रिश्ता दिखाया या आपने खुद ने रिश्ता देखा and then let's get married. Do you first know the guy? Do you really want to get married or not? Did you have that clarity on the topic of marriage? Marriage is not just what you see from the outside, and you can't get married to a person with either money or good job, good business, or you have something. You have to marry the person along with the values that the person carry. What values are you carrying? The recent case of Ketan Agarwal, he was only celebrating the girl's birthday. What did he get in return? I don't think that should be the outcome for any relationship. आपको शादी नहीं करनी है, आप उस चीज के बोलने की हिम्मत रखिए. आप ये हिम्मत रख सकते हो किसी को मारने की, लेकिन क्या आप ये हिम्मत नहीं रख सकते हो किसी को ये बताने के लिए कि मम्मा पापा मुझे शादी नहीं करनी है, इससे नहीं करनी है या किससे करनी है. इतनी कॉन्वर्सेशन, इतनी चीज की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए. आप कैसे किसी इंसान की डेथ तक, मर्डर तक प्लान कर सकते हो? वी वर नॉट टॉट ऑल ऑफ दिस. हाउ डिड दिस कम इनटू पिक्चर वेयर एवरी ऑल्टरनेटिव न्यूज इज कि किसी ने किसी को मार दिया? क्यों? इज इट दैट इजी? किसी की जिंदगी इतनी आसान है कि आप किसी को इतने आराम से ऐसे जाके प्लान करते हो कि 2-3 दिन पहले कि कैसे करना है, क्या करना है, एंड देन यू मेक इट लाइक कि और कुछ हुआ ही नहीं है. आई थिंक इट्स अबाउट द माइंडसेट. इट्स अबाउट द वैल्यू सिस्टम्स. द वैल्यू सिस्टम इज मिसिंग. द माइंडसेट इज मिसिंग. इफ यू वांट टू गेट मैरिड, you have to have the clarity on you getting married, be it a love marriage or an arranged marriage. Don't get into marriage just because for the sake of society. You're not marrying a person for the sake of society. You're marrying for yourself. You have to spend your 30-40 years and then make sure that yes, I want to go for it. After entering into the relationship, you want to kill the person. You want to plan somebody. If you are already having a relationship, don't get into marriage or convince the parents to let you get married to the person you want to get married to. Why do you want to complicate it by killing somebody? If you're not happy with in a relationship, you have to stand for yourself. And there are also cases कि आप शादी कर रहे हो और उसके बाद भी extramarital relationships. Do you really think the meaning of love is like अगर एक नहीं पसंद आया, कोई options है and then alternatives है? क्या ये प्यार है? क्या ये शादी है? Why are you guys reducing the meaning or the उसका मतलब ही क्यों पूरा मिटा रहे हो? Why are you getting into all of this? शादी करनी है तो सोच के करो, और अगर शादी नहीं करनी है तो करो मत. एंड पेरेंट्स, प्लीज गिव टाइम टू योर किड्स टू आस्क देम फॉर श्योर कि शादी करनी है, श्योर हो, कुछ तो रहोगी, उसके बाद टेक दैट स्टेप. 6-8 महीने में लोग क्या कहेंगे, सगाई इतने दिन टिक गई. कम ऑन, सगाई टिके या ना टिके, आज वो एक पर्सन का डेथ थोड़े महीने में ही उसकी शादी होने वाली थी और आज डेथ हो गई है उसकी. क्या ये सही है? If you are not happy with somebody, have the guts to fight for yourself, be it your family or society or the guy or anything, but at least can you not stand for yourself? Don't spoil someone's life by taking such actions that ये नहीं हुआ तो निपटा दिया. इतना आसान है किसी की जिंदगी निपटाना.